My dear speakers, what to say and how to say, and why to say, and when to say, and where to say. These are some of the interesting questions so that we can become public speakers by answering these questions. Whenever you start your effort to be a public speaker, ask yourself these fundamental questions and make a list of these fundamental questions as a comment so that you have a very clear roadmap, a very clear idea that how you can be an excellent public speaker. Now, list of the questions that you will make as a comment include what to say, how to say, why to say, when to say, and where to say. These are some of the fundamental questions regarding public speaking. So please make a comment and make these questions so that we can answer them properly, and then we continue our public speaking training. Yes. So I see the first comment of Nayyar Abbas Khan. What to say, why to say, how to say, where to say, and when to say. Now, what to say? Number one, what to speak, what to communicate. That is knowledge, your topic. What is your topic? This is question number one. Do you have data, information, and knowledge regarding the topic? What to say? What to say means the topic, data, information, knowledge. Do you have sufficient preparation with data, with information, with knowledge? This is number one. Now, why to say it? Yeah, why to speak? Why should I be a public speaker? So, though it is not a scientific discovery, but there are two types of people, alpha and sigma. Please make a comment. There are two types of people, alpha and sigma. Alpha people are strong people. They have leadership qualities. They are extrovert and they need others so that other people should follow, admire, appreciate them. So such kind of people are called alpha people. While the other category is sigma. Sigma are those people who are passive, lazy, they are introvert, they do not need any fame or any validation or any followers. They are happy where they are. So they are here and there. They don't care. They are careless or they are carefree. तो ये दो किस्म के लोग होते हैं. एक को अल्फा कहते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत किस्म के लोग. वो लीडर होते हैं, उनको लोग चाहिए, बातचीत करते हैं, एक्स्ट्रावर्ट है. कुछ लोग जो है अपनी दुनिया में गुम होते हैं. सो दे आर सिग्मा. दे आर नॉट सो, दे डोंट वांट टू बी पब्लिक स्पीकर्स. अब मैं क्यों पब्लिक स्पीकर बनूं, क्या ज़रूरत है?
बस आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, एक दिन मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाएगा. So you have to identify your personality, whether you are alpha or you are sigma. One can convert, one can change from alpha to sigma and from sigma to alpha, and it happens. बड़े बड़े लोग जो है वो बड़े एक्टिव रहते हैं, बड़े जो है ना मुतहर्रिक रहते हैं, डायनामिक, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग. लेकिन जब उनको कोई वो नहीं मिलता रिस्पांस, तो वो छोड़ जाते हैं, वो फिर आराम से गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं. और बहुत से सिग्मा जो है वो अल्फ़ा बन जाते हैं. नहीं यार, मैंने कोई रोल प्ले करना है, मैंने लीडर बनना है, लोग मुझे पहचाने, मैं मशहूर हो जाऊं. तो वो फिर सिग्मा से अल्फ़ा बनते हैं, अल्फ़ा से सिग्मा बनते हैं. सो दिस इज नॉट अ परमानेंट कैटेगराइजेशन दैट यू कैन नॉट चेंज इट. Usually public speakers, they are alpha people. They are very strong, they are self-confident, and they want people to listen to them, to read them, to be in touch with them. They want to be admired, to be clapped. They want a big show so that people come to them and they appreciate and they congratulate. So you have to see that what kind of personality you are. However, sometimes public speaking or speaking itself becomes your job requirement or education requirement. तो कभी कभी ये ज़रूरी भी है कि भाई अपने इंटरव्यू में जाना है, वाइवा में जाना है, लोगों के सामने तकरीर करनी है. आप एक ऑफिसर है तो आप प्रेस को अपने फेस करना है, लोगों के क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं. सो समटाइम इट इज़ नेसेसरी वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट. ये आपका कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली राइटिंग बट आल्सो स्पीकिंग. Now, speaking is sometimes more difficult than writing because you are live, you are there, and whatever you speak, the other people are listening to you, they are participating, so it is more interactive. That's why speaking is more technical, it is more lively, and it needs more energy and more involvement, more attention. अब आप आराम से बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, आप लिख रहे हैं, कोई नहीं है, बस घंटा लिया, आधा घंटा लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन स्पीकिंग में तो सामने सामने सारा चल रहा है. सो दैट्स वाई स्पीकिंग दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड यू हैव टू बी more involved, more prepared, so that people, they understand you, they respond, and you use proper communication skills. Now, what is communication? Communication is to create a clear message, to convey it clearly, and to get a feedback, a clear feedback. So this is called communication loop. Communication loop. Clear message, convey it clearly, and then get a clear feedback. That is called communication. अब लोग जो है फीडबैक नहीं देते, लोग जो है ज़्यादातर वो कंजूस होते हैं, या वो डरते हैं, या उनको ज़रूरी नहीं समझते, या उनको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता. इंसान जो है ज़्यादातर 70-80% जो है दे अडॉप्ट डिफेंस मैकेनिज्म टू फ्ली, फ्लाइट, रन अवे. ज़्यादातर इंसान जो है 70-80% जो है वो मसाइल को कैसे हल करते हैं? भाग जाओ, उसको फेस ही ना करो. दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट एंड अ वेरी इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म. कौन आपको पकड़ेगा, कौन आपको गले से बांधेगा कि ये काम करो? बस गायब हो जाओ, मत करो. रन अवे, फ्लाइट. सो वी हैव टू डिफेंस मैकेनिज्म्स. वन इज फ्लाइट एंड द अदर इज फाइट. फाइट एंड फ्लाइट. या आप लड़े या फ्लाइट, चले जाओ. मतलब आप अगर आप सोल्जर है और आपका कमांडर आपको ज़बरदस्ती जंग में भेजता है तो और बात है. लेकिन आमतौर पर ज़िंदगी में जो है
कोई किसी को इतना मजबूर नहीं करता। तो इसमें वो ढूंढता है कि जी बस जाके आराम से बैठो, क्या ज़रूरी है। तो बुज़दिल लोग जो होते हैं, कवर्ड लोग, वो अपना डिफेंस इसी में ढूंढते हैं कि भाई ना करो, आराम से बैठ जाओ, क्या ज़रूरत है। So this is public speaking. You cannot run away. You cannot flee. FLEE. You cannot fly. You cannot run away. You have to face it. So communication is create a clear message, convey it clearly, and get a clear feedback. अब ये दो चीज़ें जो है ये तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप एक क्लियर मैसेज बनाएं, फिर उसको क्लियर पहुंचा दे। लेकिन जो फीडबैक है उस बंदे से दोबारा पूछने की आपको समझ आई कि नहीं आई, आपका क्या ख्याल है, वो नहीं करता। आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, आप जो है 20,000 का खाना खाते हैं, ठीक है, 2 घंटे आप उधर बैठे रहते हैं, लेकिन वो गरीब जब आपको कहते हैं यार फीडबैक दे दो सर जी, ये फॉर्म फुल करो, वो हमसे नहीं होता। मतलब हमें दूसरे की परवाह ही नहीं है, दूसरे बंदे की परवाह ही नहीं है कि यार इस गरीब ने इतना खाना खिलाया, ठीक है पैसे भी मैंने दिए, लेकिन एक थोड़ा सा मैं फीडबैक दे दूं, उसका दिल खुश करूं, ये हमसे नहीं होता। क्योंकि दूसरा बंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि हम उसको कोई जवाब दे दे कि भाई आपका नईम खान, आपने घंटा पढ़ाया, बड़ा अच्छा पढ़ाया, हमें समझ आ गई, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम, कोई 1000 में 2 स्टूडेंट होंगे जो आपको फीडबैक देते हैं। बट फीडबैक इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरे बंदे से पूछना कि आपको समझ आई कि नहीं आई, आपका मेरे इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर असेसमेंट, व्हाट इज़ योर एनालिसिस, व्हाट इज़ योर फीडबैक, आपका क्या ख्याल है। तो वो अगर आपको बता दे कि जी मुझे समझ आ गई, थैंक यू, तो इसका मतलब है कि आपका काम जो है वो पूरा हो गया। सो मोस्टली पब्लिक स्पीकिंग इट इज़ नॉट इंटरैक्टिव, दे डू नॉट आस्क फॉर फीडबैक, बट इन मॉडर्न टाइम्स नाउ फीडबैक हैज़ बिकम कंपल्सरी इन मैनी इवेंट्स। हर जगह जो है वो एक फॉर्म पड़ा होता है कि इसमें अपना रिमार्क्स बताए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा। अब रिलीजन में या इस तरह की चीज़ों में ये चक्कर नहीं होता, वो तो वन साइड ट्रैफिक है, बंदा बोल रहा है, उधर से कोई पूछगछ नहीं है कि भाई आप लोगों का क्या ख्याल है। नाउ इफ यू कैन फेस द कैमरा यू कैन फेस एनी डिफिकल्टी। ये मेरा अपना कोटेशन है, हो सकता है किसी और ने भी कहा हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप कैमरे को फेस कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हैं, और ये सबसे मुश्किल काम है। आप लोग क्लास पे अटेंड करते हैं, नोट्स पे पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सेफ 2 में लाइव आना, एक टॉपिक पे बोलना, ये सिर्फ लीडर्स का काम है। इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, इट इज़ द वर्क ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। Now, the camera, because we are doing an online course and mostly nowadays speaking is through camera. आजकल जो स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग, वो कैमरे के थ्रू होता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर देयर इज कैमरा। इवन जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो वो भी लोग रिकॉर्ड करते हैं। टिकटॉक, एवरीवेयर कैमरा इज नाउ सो इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू कैन फेस द कैमरा, अब आपके लिए कौन इकट्ठे करेंगे 500 लोग कि आ जाओ उनको तकरीर करो, वो तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सेफ 2 में जो है आपके लिए एक प्लेटफॉर्म आसान मौजूद है, आप जाके उसको लाइव को क्लिक करें, शुरू हो जाए, फिर क्लिक करें, सेव करें, जाए। नाउ हाउ टू से इट नीड्स करेज। Courage is important. Coward people cannot speak publicly. Coward people cannot speak publicly. जो बुज़दिल लोग होते हैं, बेगैरत लोग होते हैं, तो वो नहीं बोल सकते, वो उनमें गैरत ही नहीं है, हया नहीं है उनमें। ठीक है। अब ये उल्टा है कि हमारे यहाँ जो है ये हया और
ख़वातीन और पर्दा और ये और वो भी माने हैं पब्लिक स्पीकिंग में, वो उसको नहीं करने देते कि ख़वातीन कैसे पब्लिक में आएंगे, स्पीक करेंगे, वो तो कोई बदबूदार चीज़ है, या उसको तो जो है खामोशी में रखो, किसी पर्दे में रखो ताकि उनकी बदबू बाहर न जाए। तो ये जो है ना, ये ख़वातीन को ऐसे बहाने लगाते हैं कि जी तुम बड़ी अच्छी चीज़ हो, इस वजह से हम आपको छुपाते हैं। अच्छी चीज़ को कोई नहीं छुपाता, बुरी चीज़ को छुपाते हैं। लेकिन ये उनको वैसे उनको ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया है कि जी हम आपकी इज्जत करते हैं, अब हमारी इज्जत है तो ये है तो वो है। वो सारे ड्रामे हैं ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे बस। So we have a lot of cultural problems and we have traditional problems. हमें ये समझाया जाता है कि साइलेंस इज गोल्ड, बेसिकली कम्युनिकेशन इज गोल्ड। ये माइंड सेट की बात है। बिलीव कंट्रोल योर पर्सनालिटी। जो आपका बिलीफ सिस्टम है, इट कंट्रोल्स योर पर्सनालिटी। तो उसमें यह है कि आप व्हेन यू फेस द कैमरा, यू कैन फेस एनीथिंग, यू कैन फेस एनी प्रॉब्लम। अब ऐसे भी लोग होंगे करेंगे नहीं जी मैंने कैमरा को फेस नहीं करना, मैं वैसे स्पीच करता हूं। तो करे, किसने आपको मना किया है? लेकिन कैमरा इज द इजीएस्ट वे दैट यू कैन ट्रेन योर सेल्फ। In today's notes on public speaking, I have given you a lot of arguments that why camera is important. Because camera gives you self-discipline. ठीक है ना, मैं अपने इस पे ये हाथ लगाता हूँ कि यार ये कैसा है, अपना दाढ़ी शाड़ी ठीक करता हूँ, ग्लासेस, ताकि मैं फ्रेम में आ जाऊँ। So you find yourself as a whole, and this is a mirror for you. For your body, for your speaking, for your personality, you look at yourself and your communication with people. So this is the issue that people, they avoid camera, and many people, they cannot face camera. When we do public speaking, so we have a topic, we need vocabulary, we need knowledge, we need preparation, and also our body language, our intonation, that is important. Intonation means that the rise and fall of my tone. Sometimes I speak slowly, sometimes I speak rapidly, sometimes with high pitch, sometimes with low pitch, according to the situation. That is important. You cannot speak like a robot. You cannot speak like a machine. You have to speak with some smile, with body language, face expressions. That is part of your public speaking. That is highly essential. Looking into the eyes of the people who are in front of you. अगर आप कैमरे के साथ बोलते हैं, so you have to look at the camera. Sometime for some complicated topics, you can have your speaking notes. कि आप अपने पास जो है वो नोट्स रखें और उधर से बोले। Sometime for practice you can read out. आप जो है स्पीकिंग नहीं करते, लेकिन सेफ 2 में एक पैराग्राफ है या कोई किताब का चैप्टर है, उसको आप पढ़ ले बस। So reading loud for practice. Otherwise people don't like reading loud. They want that you should look at them and look at their face. One of the important technique is that you cannot look into the eyes of only one person. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी जब पब्लिक स्पीकर्स होते हैं तो वो पूरी मजलिस में एक बंदे को मुसलसल देखते हैं। वो उनका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, या एम ही कोई आजिज मस्कीन टाइप बंदा है, तो वो उसको फेस कर सकता है, बाकी लोगों को फेस नहीं कर सकता। बट यू हैव टू लुक एट एवरीबॉडी, यू हैव टू लुक अराउंड द होल ऑडियंस which is in front of you. So you should look there, back, center, front, right, left, everywhere you have to look so that everybody is involved. If you are just speaking like a machine, like a radio, then that will be not impressive. One thing which is highly essential for public speaking, that is the quality of your audience, that who are in front of you, who are the people, what language they understand, in what topic they are
interested. Then you can use your pathos, your logos, and your ethos, 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 logos, logos, and pathos, pathos, pathos. This is the combination of your rules, your logic, and your emotional appeal that you make the people emotional. For example, you say, ladies and gentlemen, my dear friends, today we are going to discuss, this topic is very important for you, my dear Pakistani fellows. This is the question of Pakistan. This is the question of your future. This is the question of your whatever. So this way you are making their, you are appealing to their emotions so that they get involved with you. And then you give a reason or logic. And also you give that what kind of situation it is, how much time you have, and how to salute, how to greet, how to sit, how to stand, how to wait for your turn. So all these things then are important for public speaking. The technical point is that if we can speak, why not publicly? If we can speak with our mother or with our friends in our private gatherings, why not publicly? The question is the answer is based on two fronts. One, our own personality, that we have fears, we have no courage, we cannot face. And the second is no opportunities. We don't have opportunities of public speaking. People don't invite us. But nowadays, because of the social media, you have every second an opportunity. Your Facebook profile, save to your WhatsApp, your Instagram, your Twitter, your YouTube, everywhere you have opportunities of public speaking. Whether you receive a lot of likes or not, a lot of comments or not, whether people appreciate you or not, it is not the question. The question is your own involvement. Your question is your own practice. The question is to convey your own message. Today you are not popular, but one day you will be popular. And you will be famous. It takes time. Because social media, there is a lot of competition. अब वहाँ इतना कंपटीशन है कि उसमें आपके लिए कोई बंदा एक मिनट भी निकाले, एक लाइक करने का उनके पास टाइम नहीं है. So you have to wait. You have to be patient. And when you have patience, so one day people will start recognizing your services. अब मेरा सोशल मीडिया में कोई 4-5 साल गुजर गए तो मेरा क्या हाल है? ठीक है, मुझे कोई 25-26 हज़ार लोग फॉलो कर रहे हैं या कोई कमेंट्स वगैरह करते हैं या लाइक शाइक्स मिलते हैं, क्योंकि मेरे टॉपिक्स जो है वो ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड होते हैं. लेकिन ये मेरा मिशन है. मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मैं वायरल हो जाऊँ लेकिन उसका किसी को फ़ायदा ना हो. तो वो तो मेरा मिशन है. ये तो मेरा कोई कारोबार नहीं है या मेरा कोई मुझे कोई मशहूर होने का इतना भी कोई शौक़ नहीं है. तो दैट इज़ my mission. So mission, it will take time. And just to tell you my story again, कि जब मैं सोशल मीडिया में पहले दफ़ा आया तो आप हैरान होंगे कि मैंने एक बंदे को कहा कि यार अपना मोबाइल पकड़ो और मैं इसमें बोलूँगा. तो वो गरीब जो है पूरा घंटा आधा घंटा मोबाइल पकड़ता था और मैं उसमें बोलता था और फिर हम उसको अपलोड करते थे. फिर हमें ख्याल आया कि यार इस गरीब को मैंने 1 घंटा खड़ा किया है मोबाइल, तो मैं अपने मोबाइल को सामने भी रख सकता हूँ, किसी पत्थर पे, किसी चीज़ पे, क्या ज़रूरत है. तो फिर मैंने कहा यार कमाल है, सही बात है. तो फिर मैं मोबाइल जैसे अभी मैंने सामने रखा है, फिर मैंने सामने रखा. फिर एक दिन ख्याल आया कि यार ये रिकॉर्ड कराना फिर उसको अपलोड करना, ये तो पूरा आधा घंटा आपका ले लेता है. तो क्यों ना बंदा लाइव आ जाए, लाइव बोलो, फिर फिनिश का बटन दबाओ, वो रिकॉर्ड हो जाएगा. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू लर्न द टेक्निक्स, you learn the mechanics, and then you become expert. Nothing comes to you at the master level. This is our biggest problem. हम स्पीकिंग का तजुर्बा करते हैं तो जी किसी इंटेलेक्चुअल टॉपिक से,
राइटिंग का करते हैं तो बड़े कोई मुश्किल टॉपिक्स है यार, सिंपल चीज़ों पे बोलो, प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। स्लोली एंड ग्रेजुअली देन यू विल इंक्रीज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड योर लेवल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. So I have given you excellent notes for today's public speaking class. I want that people become very excellent public speakers. This will help you a lot in interviews and viva, and your personality will become more impressive when you are public speakers. The basic question is, the fundamental question is, if I am a speaker, why not a public speaker? अगर मैं बोल सकता हूं, मुझ में बोलने की सलाहियत है, तो फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग क्यों नहीं कर सकता? क्या वजूहात है? तो अगर आपको डर है तो अपने डर को ख़त्म करो, प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है? आप अपने कैमरे में चीज़ रिकॉर्ड करो, किसी को मत भेजो, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर उसको अपलोड करो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करें, कैमरा सामने रखें और उसमें वीडियो किसी टॉपिक पे बोले, दैट इज़ योर प्रैक्टिस. कैमरा इज़ योर मिरर. So now if you have any question, so you can ask. Otherwise, after the second class, please read the public speaking notes for today, and then go to SAFE 2 and deliver a speech on public speaking. Why public speaking is important, how one can be a public speaker, what are the public speaking skills, what are communication skills, what is communication. Deliver a 5-minute speech and then you will enjoy it. अब ये जो मैं आपको कहता ना मेरी बात, उस पर अमल क्या करें. दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस. अब दिस जो है, दिस इज अ प्रोनाउन और इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो कौन सा एडवाइस बेस्ट है? मेंशन इट, स्पेसिफिकली मेंशन इट. Yes, you are improving writing, but also now come to speaking. Speaking and writing both are interconnected. Whatever you write, speak on it. Whatever you speak, write on it. Both are helpful for each other. We can start by recording ourselves. अब we plural है तो आखिर में भी plural होगा, ourselves. I have already given a detailed lecture in this group on ethos, pathos and logos. We will be discuss this more in SAFE essay also when we start the essay classes. Ethos means it comes from the ethics, akhlaqiyat, कानून, तरीक़ाकार, क्या तरीक़ाकार है. And pathos means emotions, to become a little emotional, बिल्कुल मशीन की तरह नहीं बोलना. And logos means your reasons, how you are explaining logically, with knowledge, with data, information. So with these three things are combined, then you are an excellent public speaker or writer. Like writing, speaking is also a skill. So you have to do it. Experiential learning. If you don't speak, you will never become a speaker. If you don't write, you will never become a writer. Both speaking and writing are interrelated, interlinked, interconnected. Because when you prepare your topic, so you can write on it and you can speak on it. If you are more extrovert, so you will be able to speak on it. If you have seen December courses, so there is no philosophy, there is gender studies. लेकिन फिलॉसफी जो हमारा क्लासरूम है उसमें हमने सारा कोर्स कवर किया है.
ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे लाइव सुने, आप हर क्लासरूम को ऊपर से नीचे एक्सप्लोर करें. Explore all classrooms from top to bottom. It is not necessary that you listen to me live. तो फिलासफी, यही नईम खान उधर भी बोलता है, अभी भी बोल रहा है. तो फिलासफी क्लासरूम में तमाम कोर्सेज को मैंने कवर किए हैं, तमाम नोट्स मैंने दिए हैं उधर. So if you are really interested in philosophy, go to SAFE Philosophy Classroom and explore it from top to bottom. ये जिस तरह के हम YouTube सुनते हैं तो जरूरी नहीं कोई YouTube वाला जो हमारे सामने बोल रहा हूँ. सो यू कैन डू इट. तमाम जो कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है वो ऑलरेडी हमने कवर किए हैं हर क्लासरूम में. अब हम दोबारा उसको करेंगे. लाइक टुडे वी हैव जेंडर स्टडीज. So gender studies is again related to philosophy, it is related to psychology, sociology, and it is a very, very essential subject to understand the gender roles. And please be very careful about the singular and plural. When will you take philosophy classes? Because it will be not one class, there will be many classes. And philosophy is a proper noun, so it is better to write it with capital P. The small things determine your personality. Whether you are conscious, you are careful in small things, so then you will be also careful in big things. So all the best, guys. See you now in SAFE Gender Studies classroom. And I would like to see you as public speakers in SAFE 2 on any topic of your choice or public speaking itself.